Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. Today in this video we are going to learn standard 7 social science, and this is video number 4, or we can say part 4 of chapter number 8, that is Delhi during the medieval period. Now it is very much clear to you and that medieval means middle age, okay, and we are learning Delhi and Delhi Sultanate in the medieval period. In these in previous videos we have already completed 4 dynasties. One is slave dynasty, then after we have completed Khilji dynasty, then Tughlaq dynasty, and then after we have completed Vijayanagar state, which was established by two brothers of Yadav clan, that is Harihar Rai and Bukka Rai. And in that we have we had one word like Bahamani Sultanate. So here in this video we are going to learn about the Bahamani Sultanate. So we have already discussed that this Delhi was a part of North India, and during the same time what happened, the efforts were done to establish the powerful and constant dynasty in the South India also, and during this they established the Hindu kingdom, that is Vijayanagar. Okay, so now in this video we are going to learn Bahamani Sultanate. So the Amirs in the Deccan rebelled करना मतलब फिर से अटैक करना, जिसको हम बड़वा करना बोलते हैं वो. Hassan, one of the efficient Amirs, became the Sultan and founded the Bahamani Sultanate there. Okay, so Deccan, that is also the part of South. Okay, we have already completed in the 7th chapter Deccan plateaus and all that thing. Okay, so who established the Bahamani Sultanate? So here the answer is Hassan. So Hassan established the Bahamani Sultanate. Okay, Hassan, one of the efficient Amir, matlab that is one kind of, we can say, clone, became the Sultan and founded the Bahamani Sultanate there. So where this Bahamani Sultanate established? So in Deccan areas. And who established this Bahamani Sultanate? So Hassan established this Bahamani Sultanate. Muhammad Gawan was capable minister and an efficient administrator of the Bahamani Sultanate. So that is also very important, that who was the efficient, matlab capable minister or administrator of the Bahamani Sultanate. So Muhammad Gawan or Mahmud Gawan was a capable minister and efficient administrator of the Bahamani Sultanate. He won many territories and extended the boundaries of the Bahamani kingdom. Rather, he was not king, but he was only minister and administrator. What he had done, he won so many territories and extend करना मतलब spread the boundaries of the Bahamani kingdom. जो Bahamani kingdom था उसकी जो boundaries थी, areas था, वो उसको क्या किया, उसने extend किया. The power of Bahamani Sultanate weakened after his death. So first of all, what you have to remember, Hassan was the founder of Bahamani Sultanate. Then after उसके बाद कौन आता है, Mahmud Gawan. So Mahmud Gawan was the powerful and capable minister and even efficient administrator. What he did, so he won so many territories and extended the boundaries of Bahamani Sultanate. And then after the death of Muhammad Gawan, what happened, Bahamani Sultanate weakened after his death. ये जो Bahamani Sultanate है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, so weak होती गई. There were frequent conflicts मतलब संघर्ष होना, fight होना between the Vijayanagar and Bahamani kingdoms. We have discussed in the previous videos in Vijayanagar emperor, okay, that they have the conflict मतलब fight होना, means लड़ाई झगड़ा होना, and frequent मतलब after sometimes continuously start होना. किसके बीच? तो Vijayanagar and Bahamani kingdom, both were the part of South India, but this Vijayanagar was a part of Tungabhadra and nearby areas, and here we have like Deccan areas. Okay, so what you have to remember, who was the founder of Bahamani Sultanate? So Hassan.
हसन के बाद उसका ही जो मतलब मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर था मोहम्मद गुवन वो आता है। देन आफ्टर सारे जो किंग्स थे दे वो वेरी वीक, और कंटिन्यूसली वो पूरा जो मतलब वीक होने जाने के बाद ये बहामनी सल्तनत है वो वहाँ पे क्या हो गई, एंड हो गई। एंड देयर वो कॉन्फ्लिक्ट, कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स, दैट यू हैव टू रिमेंबर। After the downfall of the Bahamani Sultanate, many of his provinces मतलब states, small states became independent। तो एक चीज़ that is the common thing कि एक king है, उसका एक kingdom है, right? अगर वो king की death हो जाती है तो nobody is there to rule over that kingdom। तो क्या होगी कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है वो अपने आप में से क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, एंड अलग अलग किंग बन जाएंगे। सो द सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग दैट बहामनी सल्तनत। अलोंग दिस द 5 प्रोविंसेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार एंड बीदार बिकेम एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स। नाउ सी, एक ही स्टेट था बहामनी, उसमें से मोहम्मद गवन की डेथ हो जाने के बाद 5 प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट हो गए। मीन्स एक स्टेट वो था बहामनी, उसमें से 5 क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 विच वर देयर। सो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार एंड बीदार। यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग दैट विच 5 प्रोविंसेस बिकेम independent after the downfall of Bahamani Sultanate. So the answer is Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Berar and Bidar, right? Then after end of Delhi Sultanate, now we were in the south, okay, now we'll have to learn end of Delhi Sultanate. Why this Delhi Sultanate like we can get the downfall or end, what was the reason, कौन कौन से reasons थे, कौन कौन से factors थे जिसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत है उसका end हो गया, that factors will have to learn here. So Firoz Shah Tughlaq ascended the throne after Muhammad Tughlaq. We have completed in Tughlaq dynasty that Muhammad Tughlaq जो है वो लास्ट था, तो उनकी डेथ के बाद और एक न्यू किंग आया, वो था फिरोज शाह तुगलक। वो क्या होता है, एसेंडेड द थ्रोन, मतलब वो थ्रोन के ऊपर आते हैं। हावेवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत बिगेन टू वीकेन। सो हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रॉम हुज टाइम द दिल्ली सल्तनत बिगेन टू वीकन। सो द आफ्टर द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या होता है, ये जो दिल्ली सल्तनत है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वीक होती गई। द रीजन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस्ड द इन्वेंशन एंड प्लंडर ऑफ द दिल्ली बाय तैमूर। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटनेस होना मतलब साक्षी होना, प्रूफ होना, किसका वो प्रूफ है, तो इन्वेंशन करना मतलब चढ़ाई करना, ओके, अटैक करना। किसके ऊपर, तो दिल्ली के ऊपर तैमूर ने यहाँ से क्या किया कि जो इन्वेंशन है वो करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स एक चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लो कि इंडिया के ऊपर जब भी फॉरेनर्स ने इन्वेंशन किया है, मतलब बाहर की कंट्रीज़ के कोई भी किंग ने इन्वेंशन किया है, द रीज़न इज़ मनी ओनली। लूट के जाते थे मनी, क्योंकि वो टाइम पे इंडिया वॉज प्रॉस्परस कंट्री और बहुत सारी वेल्थ थी, फाइनेंशियली जो भी टेम्पल्स थे वो भी पॉपुलर थे, एंड वी कैन से कि वही रीज़न था कि वो लोग इन्वेंशन करते थे। तो किसने इन्वेंशन किया, सो तैमूर ने इन्वेंशन किया। कहाँ पे, सो दिल्ली के ऊपर। द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरी खान टूक एडवांटेज ऑफ द chaos and establish the सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। फिर दोनों की लड़ाई में और एक तीसरा है वो प्रॉफिट उठा के लेके जाता है। एंड गवर्नर ऑफ लाहौर कौन था, खिजरी खान। लाहौर प्रेजेंटली इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, बट अर्लियर इफ वी आर टॉकिंग तो इंडिया जो था वो यूनाइटेड इंडिया था, ओके, यूनाइटेड इंडिया।
तो अभी का जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया। तो तब लाहौर का एक गवर्नर था एंड द नेम ऑफ दैट गवर्नर वाज खिजरी खान। वो एडवांटेज उठाता है, कैओस मतलब जो भी मतलब मैनेजमेंट था वो मिसमैनेज था, एंड एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। तो दोनों के बीच में मतलब लड़ाई झगड़े के बीच में और एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो जाती है, दैट इज सैयद डायनेस्टी। एंड हु वाज द गवर्नर एंड हु एस्टैब्लिश दिस सैयद डायनेस्टी? सो खिजरी खान। The authority of these sultans was limited to the region around the Delhi. Now he established, means Khijri Khan established a new dynasty, that is Sayyid dynasty in Delhi, but the authority became limited where around Delhi only. दिल्ली के आजू बाजू में एरिया में ही उन लोगों की जो अथॉरिटी थी वो क्या थी? लिमिटेड थी। In 1451 CE, an Afghan leader or Sardar Bahlul established the rule of Lodi Dynasty in Delhi. So Sayyid dynasty के बाद one more new dynasty raised in Delhi, that is Lodi Dynasty. And who was the founder of Lodi Dynasty? So Bahlul Lodi was the founder of Lodi Dynasty. Okay, so what you have to remember? First, Khijri Khan established the Sayyid dynasty, okay, Khijri Khan, who was the governor of Lahore. Then after what happened? New dynasty arose in Delhi, that is Lodi dynasty. And who was the founder or establisher of Lodi dynasty? So you have to remember Bahlul Lodi, who was the leader of Afghanistan, and who was called Sardar. His son Sikandar Lodi ascended the throne after this. मतलब लोडी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सो यू हैव टू रिमेंबर बहलोल लोदी। आफ्टर द डेथ ऑफ बहलोल लोदी हु असेंडेड द थ्रोन? सो ही सन सिकंदर लोदी। सो सिकंदर लोदी ascend the throne. Though Sikandar Lodi had qualities of a good ruler, he lacked religious tolerance. No doubt he was like good ruler and even he had the good qualities, but he was a lacking. Lack होना मतलब उसके अंदर थोड़े बहुत lacking points थे regarding to religious, okay, religion. A struggle for the throne began after his death, in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and became the rule of Delhi. Now remember one thing, there was a chaos throughout the places nearby Delhi, and एक भाई दूसरे भाई की भी मतलब हत्या करके मर्डर करके वो क्या होते थे, थ्रोन के ऊपर आ जाते थे. So the same thing here also happened, that after the death of Ibrahim Lodi की डेथ हो जाने सिकंदर लोदी की डेथ हो जाने के बाद फिर एक न्यू जो रूलर है वो आता है, एंड ही वॉज इब्राहिम लोदी, और वो क्या बनता है, रूलर ऑफ दिल्ली. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट कम्स सैयद डायनेस्टी, देन आफ्टर कम Lodi dynasty. So who was the founder of Lodi dynasty? So Bahlol Lodi, and he was a leader, or we can say Sardar of Afghan. Okay, then after सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद क्या होता है, जो इब्राहिम लोदी है, he come and became the ruler and came on the throne of Delhi. The Amirs were not happy because of his arrogant attitude. नो डाउट जो इब्राहिम लोदी था वो ब्रेव किंग था, बट उसका जो एटीट्यूड था वॉज वेरी एरोगेंट, मतलब बहुत एक्स्ट्रा वर्ड्स एटीट्यूड था, एंड द अमीर वर नॉट लाइक दैट. देर वॉज अ रीबेलियन, मतलब फिर से लड़ाई होती है इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल. बाबर द एम्पेरर ऑफ काबुल इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम. सो हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, एक फिर से आता है, मतलब अटैक होता है, कहाँ का, तो काबुल का एम्पेरर है, मीन्स दैट इज़ ऑल्सो वी कंसिडर इन द फॉरेन. ओके, तो वो कौन है, बाबर. तो बाबर अटैक करता है दिल्ली के ऊपर, और वो जीत के फिर अपनी डायनेस्टी है वो एस्टैब्लिश करेगा. ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE. So they have like one war occurred between them. Between whom? So बाबर के बीच में, बाबर एंड इब्राहिम लोदी. आई एम राइटिंग हियर फॉर यू, इब्राहिम वर्सेस बाबर. कहाँ पे होता है? सो पानीपत इज अ नेम ऑफ प्लेस.
and during which year? So 1526 BC, right? Between whom? So Ibrahim Lodi and Babur. And who defeated? So Ibrahim Lodi defeated and Babur won that battle and founded the Mughal Empire, which lasted for approximately 2000 years. तो लोधी डायनेस्टी के बाद मतलब जो लास्ट किंग था कौन? इब्राहिम, उसको किसने हरा दिया? सो बाबर ने हरा दिया। और अभी यहाँ से जो भी लोधी डायनेस्टी थी वो फिनिश हो गई और दिल्ली में फिर एक न्यू डायनेस्टी आई, दैट इज़ मुगल डायनेस्टी। और मुगल एज और मुगल पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट वी विल लर्न ओके इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो क्या आपको याद रखना है? फर्स्ट सैयद डायनेस्टी, देन आफ्टर लोधी डायनेस्टी, एंड देयर वाज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। कहाँ पे हुई? पानीपत। एंड इन विच ईयर? सो 1526 सी। हु डिफीटेड? सो इब्राहिम लोधी डिफीटेड। व्हाट वाज द रिजल्ट? मतलब फेवर में किसके गया? तो बाबर। और वहाँ पे लोधी डायनेस्टी का एंड हो गया और मुगल जो टाइम है वो अभी से दिल्ली सल्तनत के ऊपर मुगल रूल जो है वो अभी स्टार्ट होगा, दैट वी विल डिस्कस इन द upcoming videos. I hope it is clear to you, but still you have any confusion, so you can write in comment box. I will try to solve your problems. And thank you for watching the video. Have a nice day.